Welcome to my YouTube channel Cbse Courses with Riti. Today we are going to start with one very important chapter from class 10th physics, that is electricity. Now we all are introduced to electricity already. We all know what electricity is all about. The light, the desktop, everything works because of this electricity or electric current, right? Now वी नो द वेरी बेसिक टर्म इलेक्ट्रिसिटी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आ रही है जिससे द अप्लायंसेस आर वर्किंग दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ओनली बट टू आर मच सरप्राइज देयर इज मच मोर टू इलेक्ट्रिसिटी रैदर दैन दैट ओनली मीन्स हर चीज का एक लॉजिक होगा एक वर्किंग होगा राइट एंड इन दिस chapter we are going to learn about the working of the electricity that reaches our home. We are going to answer how do we think, how do we calculate electricity bill, how is electricity coming to my home, why does I switch off the button and suddenly the lights get off, everything we are going to understand. But you all need to be very focused because most of the students find this chapter to be quite hard. Okay, let's talk about atoms. What are atoms? Previously it was said that atoms are indivisible. Indivisible. What does that mean? Means you can't divide the atom furthermore. I meant to say, let's say this is a atom of oxygen. Okay, this is a atom of oxygen. So previously the scientists used to claim कि इससे छोटा पार्ट और कुछ नहीं है. We can't see further more in detail क्योंकि यही सबसे छोटा पार्ट है. Okay, they used to say that we can't break it into pieces. It's small, very small. But then after progress, after development of technology and everything, we got to know that ये circle जिसको हम सिर्फ atoms बोल रहे थे, it also have a structure. There is a structure of atom, that is proton, neutron, electron. Proton are the red ones, neutrons are the blue ones, and this is electron. In previous classes we have already learned the orbit of electrons are there, protons have positive charge, electrons have negative charge, neutrons have neutral charge. We know that this keeps on moving, the protons and neutrons stuck together in the middle of here. So this all we have studied, we know what about the structure of atoms. Okay, now electric charge. Don't be scared if you are not able to understand everything, just go with the flow, just listen to me, keep writing down the things I tell you to do. First of all, write this definition. What is an electric charge? The physical property of a matter that comes into experience a force when placed in electromagnetic field, something electrons or protons possesses which causes them to attract or repel each other. Now, okay, let's say, let me give you example here. Okay, can you see the picture? I hope you can. See, this is a glass, okay, and these are few papers which are charged. Now what you will observe, कि when you bring the glass slide near the papers, you see it's getting attracted to it. This getting attracted to this. This is also getting attracted to it. You can see there is an attraction. Okay, let me give you one more example. I hope you are able to understand what I am drawing. What is this? This is a magnet. What is repulsion? जब light poles को हम साथ लाते हैं, so they repel, right? Whereas if I put the magnet like this, south, and here I'll say north, then they attract to each other. Here is a attraction, here is a repulsion. But why this is happening? ये तो हो रहा है magnet की वजह से. This is a magnetic thing. And if I say electrical charge हो गया तो वो क्या होगा? So let's say you rub the balloon. Let's say you okay. Let's take a ebonite rod. This is a ebonite rod. You rubbed it against a piece of woolen cloth. This is what? A woolen cloth, a simple woolen cloth that is available in our house.
Now after rubbing this rod with this cloth, you will observe that इस रॉड में एक पावर आ गई, एक प्रॉपर्टी आ गई है दैट्स इट्स एबल टू अट्रैक्ट और रिपेल थिंग्स. या तो वो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है या तो कुछ चीज़ों को रिपेल कर रहा है. एक और एग्जांपल, in winters when you wear some woolen cloths and suddenly when you remove it, don't you feel that there's some kind of different feeling that is not very explainable to us. We feel that our body hairs are standing up straight. Our body hairs is standing up straight as soon as we remove our woolen clothes. Why? Because of this charge only. But ये charge हो क्या रहा है, इसको डिटेल में समझते हैं. So electrical charge is just a physical property to experience a force. Now experience a force is what? Okay, what is this? It's just a physical property that helps to experience a force. Experience a force means you can either attract or repel things. एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको अलाउ कर रही है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना या किसी चीज़ को रिपेल करना जब आप इलेक्ट्रिकल चार्ज हो रहे हो. जब आप चार्ज हो रहे हो तो एक प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है कि आप अट्रैक्ट करो या रिपेल करो, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं. नाउ लेट मी गिव यू think of you example to understand, make it understandable. Let's say, okay, here I have not written that example. Okay, let me just tell you myself. When they say ebonite rod, I told you this is your rod and this is your piece of cloth. This is your cloth and this is your rod. Okay. Now, when you rub it together, it acquires negative charge and the woolen cloth acquires positive charge. Now you will say how? ये negative charge कैसे acquire कर रहा है, positive charge कैसे कर रहा है? So let's see. Let me get a new slide so that I can make you explain it better with the proper things. Let me remove this. Let me remove this. Let me get my pen. Okay. अब अच्छे से समझेंगे, ठीक है? Full concentration के साथ. This is a woolen cloth, ठीक है? This is a ebonite rod. Now let's say कि आपने ये rod लिया and you rubbed it against this cloth. You rubbed them together. Just think कि आप इस rod को clean कर रहे हो, इस तरह से rub करना. आप try कर सकते हो. You can try. You will find your ebonite rod in home. You can ask your parents for it. Woolen cloth तो we all have, right? तो ऐसे rub करना जैसे आप clean करना चाह रहे हो ebonite rod को, थोड़ा fast, okay? What you will observe कि ebonite rod में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज. एक सेकेंड. बट वुलन क्लॉथ में आ गया पॉजिटिव चार्ज. द क्वेश्चन राइजेस हाउ, कैसे हुआ ये? सो हुआ क्या कि इसपे से इलेक्ट्रॉन्स चले गए एबेनाइट रॉड के और एबेनाइट रॉड से प्रोटॉन्स आ गए वुलन क्लॉथ पे. नहीं समझ आया आई गेस, तो ठीक है बताती हूँ. एक जो एटम होता है, इट हैज 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स. वुलन क्लॉथ के भी कुछ एटम्स से ही बना था, वुलन क्लॉथ भी एटम से बना था. एबनाइट रॉड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स, means they both had many electrons, many neutrons and number of protons. बट जब आप रब करते हो तो क्या होता है, वुलन क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चले जाते हैं एबेनाइट रॉड्स में. सी आई हैव ड्रॉन दिस, जो आप भी सेम ड्रॉ कर सकते हो. एबेनाइट वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर टू एबेनाइट रॉड एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम एबेनाइट रॉड गेट्स ट्रांसफर्ड टू वुलन क्लॉथ. तब देखो कहीं पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ इंक्रीज हो गया. यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया. इलेक्ट्रॉन क्या है, इट्स अ नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज.
तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स ज़्यादा है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े एविनाइट रॉड पे तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को आप बहुत सारे नेगेटिव चार्ज को एक साथ कर लिए, तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। पहले ये भी न्यूट्रल था, पहले ये भी न्यूट्रल था, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दोनों इक्वल होते हैं तभी किसी चीज़ का चार्ज न्यूट्रल होता है। अगर ये एक बॉक्स है, आप कहो कि इसका चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, तो कैसे? इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें 10 प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है, तभी ये हमारा इक्वल हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर गए, और जब ऐसा हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। You know what, I'll tell you one more example, and these examples you don't really need to write it down, but it's more for your understanding. तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया? You understood about the charges, कि चार्ज कैसे होता है एक ऑब्जेक्ट। By the way, this is nothing but static electricity that आपने बहुत जूनियर क्लास में पढ़ा था, but most of us don't remember and I know you must have not, so I just gave you a, I just told you about it. Obviously हम इस क्लास में 10th में हम static electricity के बारे में नहीं पढ़ेंगे, we are going to learn about electricity only, but this example was just to make you understand what is electric charge. तो इससे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ से आ गए ये तो समझ आया, दैट हाउ डू वी हैव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसकी वजह से हम चार्ज कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक्स की वजह से ये चार्ज हो गया, प्रोटॉन्स की वजह से ये चार्ज हो गया। नाउ एक और एग्जांपल दूंगी, इससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा समझ जाएंगे, वी विल बी थॉरली क्लियर विथ इलेक्ट्रिक चार्ज। Okay, so let me think of an example. Okay. बलून से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी ऑल डू हैव बलून, यू कैन कैरी आउट इन योर क्लास हाउस। Sorry for my bad drawing. This is what here, obviously I know you all know, and this is a balloon. Here is a balloon. Now hair and balloon will be rubbed together. Just क्या करना, get a balloon and start rubbing it on with your hair. अब क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन है कि अब होना क्या है। So when balloon is rubbed against hair due to friction, and let's not talk about it, just say कि जब आपने balloon को rub किया with your hair, some of the electrons are transferred to balloon, some of the electrons are transferred to balloon, hair to balloon, हुए क्या ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, and hair gets positively charged, hair gets positively charged. Here also I didn't really meant to say कि ये प्रोटॉन्स यहाँ जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन्स जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या प्रोटॉन्स जाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इसमें हो रहा है hair gets positive charge, क्यों, बिकॉज इन नंबर ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स लो, जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स थे तो ये था न्यूट्रल, बट अब अगर बॉक्स में लेट्स से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर एक बॉक्स लें जिसमें अब लेट्स से 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, तो ये होगा नेगेटिवली चार्ज।
बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, राइट। तो लेट्स से कि ये वाला बॉक्स जो है, लेट्स से ये वाला बॉक्स जो है, दिस इज योर हेयर, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज वाला बॉक्स एक्चुअली हमारा बलून है. सो बलून गॉट नेगेटिवली चार्ज एंड योर हेयर गॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड. नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो बलून है ना, इफ यू get it near few pieces of papers or something, it will attract towards it. और आप ट्राई भी कर सकते हो अलग अलग मटेरियल के पास ले जाना बलून. बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा मैग्नेट की तरह, बट स्टिल यू विल फील सम काइंड ऑफ फोर्स. तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की यू कैन से की प्रॉपर्टी है कि ये अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है, राइट. सो वही यहाँ लिखने की कोशिश की गई थी, दैट there are substances which can get attract or repel to each other under few conditions. Electromagnetic field को let's say under few conditions. तो जो physical property है to experience a force means to experience attraction or repulsion due to basically electrons or protons की वजह से होता है जनरली. तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. सिंबल इज द स्मॉल q, SI यूनिट इज कूलम. कूलम. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज के जो फाउंडर थे, डिस्कवरी करने वाले थे, एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, दैट वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम. सो यू कैन से टू जस्ट पे अ ट्रिब्यूट और टू मेक हिम फील मोर ऑनर्ड, we decided to make a SI unit for electric charge named as Coulomb with the inspiration of our French scientist named Charles Coulomb. Now, charge of electron, charge of proton. मैंने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, मैंने कहा प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन साइंस इज वेरी सिस्टमैटिक थिंग. हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है. सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन is minus, let me get thickness थोड़ा कम करने दो, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. मैं इसके बारे में और बताऊंगी, अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखना. और एक चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है वो होता है 10 to the power minus 19 कूलम. नाउ मोस्ट ऑफ अस गेट कंफ्यूज, इवन आई डिड, कि ये नंबर्स क्यों, कैसे, क्या हो रहा है. तो एक इलेक्ट्रॉन को, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है. तो एक इलेक्ट्रॉन में कितनी स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की, रिपल्सन की, वो हमें बता रहा है ये नंबर. सिमिलरली प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ इज दिस 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. Now in the next video I'll tell you how to do its numerical. तब ये minus 19 को कैसे solve करते हैं, I'm really going to tell you about it. Okay, so I hope electric charge clear है. Now static electricity, current electricity. Current electricity is the one that comes in a homes. This color I guess is not visible. That is home में जो होती है. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स वी डिड, वो बलून वाला, एवनाइट रॉड वाला, वो सब क्या था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय एक्यूमुलेशन. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन सरफेस. मीन्स बलून पे क्या हुआ था, बलून पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए थे, बस बैठे हुए थे. लेट्स से बलून पे इलेक्ट्रॉन्स बस बैठे हुए थे. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज. बट करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चलते रहते हैं आगे, दे डोंट स्टॉप. बलून में क्या हुआ, दे वाज सेटल डाउन, दे वाज नो मूवमेंट. बट हेयर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी कंपल्सरी मूवमेंट. अगर मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा. It can be both insulators and conductors. Static electricity क्या होता है, it can be both insulators and conductor. For example, balloon. Do balloon is a conductor of electricity? No, it's rubber, it's plastic. नहीं होता है. But still हमने example में देखा कि static electricity में वो papers attract कर पा रहा था. Like in this image you can see. ये image से आप देख सकते हो, ये चीज़ों को attract कर रहे हैं. ये देखो, ये stick हो रहे हैं. कुछ पेपर फ्लेक्स है, कुछ है, दैट इज गेटिंग स्टिक टू द बलून. बट बलून तो एक इंसुलेटर होता है. सो हाउ इट्स हैपनिंग,
इट इज हैपनिंग क्योंकि एक्यूमुलेशन हो गया, बलून पे सारे चार्जेस इकट्ठा हो गए, जमा हो गए. बट इन करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मुझे क्या चाहिए, वो मूव करते रहे, एंड इट कैन बी ओनली ऑब्जॉर्ब्ड इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा. नाउ दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन कि कंडक्टर ही क्यों. सो दिस इज बिकॉज आपको पता है मेटल्स इस तरह के सामान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा मूवमेंट, जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जनरली इट इज इन दी कंडक्टर्स. एग्जाम्पल lightning. I'll try to cover it in a special video, lightning का process. And ebonite rod against woolen piece of cloth. ये वाला भी एग्जाम्पल हमने किया. This balloon one also you can write it down. करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल एग्जाम्पल यूज्ड इन होम्स, हम जो घर में यूज करते हैं. बात खत्म है. सो दिस वॉज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो. एक बार मैं इस इमेज को करना चाहूँगी. ये ग्लास है जो कि चार्ज हुआ हुआ है. सो इट्स एक्चुअली अट्रैक्टिंग पेपर. सिमिलरली यू सी, पानी ऐसे जाना चाहिए था, बट इट्स गेटिंग अ बिट attracted towards the balloon. This, see how many small things are getting attracted here. The fur, वो जो मैट्स होते फर वाले, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं बलून से. So this all was example of static. और प्लीज राइट दिस डाउन, दिस होल थिंग इन योर नोटबुक्स, जो भी आपने नोट्स के लिए बनाया है. राइट दिस कूलम थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस होल बॉक्स. Although it does not really come in exam कि वो आपसे बोले that define electric charge, and also we know that most of the questions MCQ आते हैं, 1 marker आते हैं, but still you should know the definition. You must remember the symbol or the SI unit of electric charge क्योंकि MCQ में बहुत easily आ सकता है. Also the charge of electron and the charge of proton, it's greatly used in numerical, so ये तो आने ही चाहिए. You should remember just like your name. Okay, that was a bit more. Anyways, static electricity and current electricity में only 3 points का difference है. To be honest, मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे कि static electricity को define करो, example दो. But obviously current electricity के ये जो 3 points हैं, you should know that कि this is by the movement of charge, it is absorbed in conductor and example. And I will advise you कि आप static का भी लिख दो, so that आप जब रिवाइज कर रहे हो तो हो सकता है जनरली यू विल नॉट रिमेंबर कि व्हाई दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज इतना स्पेशल साउंड ना करे. लेकिन जब आप यहाँ एक्यूमुलेशन देखोगे और डिफरेंस देखोगे, देन इट विल सडनली किक यू कि दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी. You can try out this examples if you want. It's a hands-on activity. For today we are done here. In the next video we are going to learn more about electric current. And to be honest, if I say this is what real chapter will start there only. अभी तो आपको बस समझना था, introductory video था ये. In the next video I'll look forward for starting the class 10 topics. So in this video we are ending up it here only. I hope you like my video. If you like my video, so do like, subscribe and share my channel. Also don't forget to ring the bell hang button so you will get all the notifications of my channel. Till then, bye bye, have a great day ahead. Please like, ring the bell hang button, subscribe, share, do everything, and comment me below which chapter you want next or whatever advice suggestion you have. I'll be waiting for you all. Please be here, be focused. Class 10th is quite important. And today we are ending our video here. Do watch the next video and I will make sure that all science and maths of class 10th is crystal clear to you all. Till then, bye bye, have a great day ahead.